आ तो कृष्ण साथे वातो छे। ये तो कृष्ण के साथ बातचीत है। आ कई कृष्णनी वातो नथी। आपणे बधा कृष्ण साथे वातो करवा आव्या छीए। भक्तिनी यात्रा छे, भावोनी यात्रा छे। कोई कहे भगवान ने, हे प्रभु ज्ञान मार्गीनु पतन थाय छे, कर्म मार्गीनु पण पतन थाय। हे प्रभु भक्ति मार्गीनु केम पतन थतुं नथी? एनुं कारण, एनुं रहस्य शुं छे? आ तो एना जेवी ज वात थई। जेम जळथी कोई पूछे, हे जळ तू बधाने डुबावे छे पण लाकडाने डुबाड़तो नथी। जल न डुबावे काष्ठ को, ये कौन सी प्रेम की रीत? बधाने सबको डुबा देता है पानी में, लेकिन लकड़ा जो होता है, काष्ठ लाकड़ू जो होय ए पानी में तरतू रहे। एम प्रभु कहे छे ज्ञान मार्गी मारी पासे आवे छे, पोतानु ज्ञान लईने मने गमतुं नथी। कर्म मार्गी मारी पासे आवे, पोतानु कर्म लईने, हे प्रभु मैं यज्ञ कर्या, मैं तप कर्या, यात्राओं करी, प्रभु ने कर्म पण गमतुं नथी। प्रभु कहे भक्ति मार्गी ने तो मैं जाते बनाव्यो छे। जेम जळथी वृक्षनु सिंचन थाय, लाकडानु सिंचन थाय, प्रभु कहे भक्ति मार्गे ने तो मैं स्वयं बनाव्यो छे। एनु हूँ केवी रीतना पतन करूं? भक्ति दुर्लभ छे। प्रभु तो मળી जशे, प्रभुनी भक्ति नहीं मळे। भक्ति ने क्या शोधशुं? श्रीमद् भागवत नी अंदर संसार सागर भौतिक जीवन में જ્યારે આપણે ભૌતિક દુઃખોથી બળીએ, શ્રીમદ ભાગવતનો આશ્રય કરીએ, मनने शांति મળે। जैसे जंगल में आग लगती है, सब पंछी उड़ जाते हैं, पशुएं भागने लगते हैं, दौड़ते हैं, आग से बचते हैं। लेकिन इस वन में एक समझदार प्राणी है, हाथी। उसे पता है सरोवर कहां है, दौड़ता है और सरोवर में आकर बैठ जाता है। संसार की अग्नि से बचता है और शीतलता भी प्राप्त करता है। हे प्रियजनों, आ संसार सागर में जारे दुखोनी अग्नि तमने बाळशे, तमे पण हाथीनी जेम समझदार थाओ। कथा रूपी सरोवरनी अंदर आवीने बेसो, सत्संग रूपी सरोवर में आओ। संसारना दुखो रूपी अग्नि तमने बाળી नहीं शके, साथे साथे तमने शीतलता पण मळशे, आनंद पण मळशे, भक्ति पण मळशे, परम शांति है प्रियजनों। यहां जो शांति हमें घर में नहीं मिलती, श्रीमद् भागवत सत्संग में, भागवत कथा में आकर हमें प्राप्त होती है। प्रभुनी सन्मुखता, गुरुनु सानिध्य, वैष्णवनो संग, त्रणेय वस्तु श्रीमद् भागवत में मळे छे। खास ध्यान राखो,
પ્રભુની સન્મુખતા, પ્રભુ કે હમ સન્મુખ રહે. ઘણા વૈષ્ણવ અમને કે ઠાકુરજી પ્રસન્ન કેમ થાય? ઘણા વૈષ્ણવ પૂછતા હોય પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનો સાધન શું? એક સૂત્ર લખી રાખજો, जीव की सन्मुखता में ही प्रभु की प्रसन्नता है. જેટલો સમય આપણે આપણા પ્રભુની સન્મુખ છીએ, માનો प्रभु हंस रहे हैं, प्रभु आनंद में हैं. जहां हमने मंदिर के द्वार को बंद किया, समझो प्रभु उदास થઈ ગયા. જીવની સન્મુખતા, પ્રભુની સન્મુખ થઈએ. પ્રભુની સન્મુખતા, ગુરુનું સાનિધ્ય. જીવ માત્રનું પરમ ધર્મ. જેણે જેણે ઘણા વૈષ્ણવ બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી પ્રશ્ન પણ કરતા હોય, અમારું કર્તવ્ય શું છે? હું ખાસ એવા વૈષ્ણવને કહીશ, સૌથી પહેલું કર્તવ્ય તમારું પ્રિયજનો વલ્લભનું સાનિધ્ય મેળવો. પુષ્ટિ માર્ગ છેટારોનો માર્ગ નથી. પુષ્ટિ માર્ગ તો નિકટતાનો માર્ગ છે. જે છેટારો છેટારો કરે છે એ તો છેટા જ રહી જાય છે. ઘણા કે અગ્નિ સ્વરૂપ દૂર રહેવાય. આ તો આધિદેવિક અગ્નિ છે, શીતલતા મળશે. વલ્લભનું સાનિધ્ય મેળવો, ગુરુનું સાનિધ્ય મેળવો. વાયા વાયા ન આવો, સીધા આવો. ઘણા વૈષ્ણવ બિચારા ડરતા હોય, એનો વાંક નથી, પણ ડરતા હોય. सीधे आओ. वल्लभ के पास जाना हो तो किसी की आवश्यकता नहीं है. श्री वल्लभ ने हमको ऐसा सुंदर राजमार्ग दिया है. बिल्कुल ट्राफिक वगरनो आ रस्तो छे. રાજમાર્ગ, એક્સપ્રેસ હાઈવે આપ્યો છે. આપણે જ આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી નાની નાની કેડીઓ બનાવી દીધી. શ્રી વલ્લભનો તો એક સ્ટ્રેટ હાઈવે છે. આ રાજમાર્ગ છે, પુષ્ટિ માર્ગ. એક બાજુ વલ્લભીય છે અને એક બાજુ વલ્લભ ઉભા છે. આજે સમાજની અંદર, જગતની અંદર વલ્લભ અને વલ્લભીયનું જે અંતર આવી ગયું છે, આજે એને મટાવવાની જરૂર છે. આવા મહોત્સવ